प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? तो बच्चों आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने डेफिनेशन, ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, verify that y is equal to e raised to power x plus 1 is a solution of differential equation y double dash minus y dash is equal to 0. तो बच्चों, what is the procedure that a linear equation or any equation is the solution of the differential equation? तो सबसे पहले बच्चों हमने जो गिवन सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूशन है या नहीं वेरीफाई करना है। उससे डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट होने वाली सारी टर्म निकालनी होती है। जैसे यहाँ पे y है, y डैश चाहिए और y डबल डैश चाहिए, और दोनों की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे और देखेंगे राइट हैंड साइड आ रही है कि नहीं। यदि राइट हैंड साइड आ रही है तो हम कहेंगे कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द प्रोसीजर। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन जो है, ये एक्सरसाइज जो है, वो टोटली डिपेंड्स अपॉन डेरिवेटिव्स। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, y is equal to e raised to power x plus 1. This is the given equation, and given differential equation is, and given differential equation is y double dash minus y dash is equal to 0. This is equation number 2. अब बच्चों हमने ये फर्स्ट से ये दोनों चीजें निकाल लेनी है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, both sides of equation 1 with respect to x, we get dy upon dx is equal to d upon dx of e raised to power x plus 1. That is equal to e raised to power x plus 0. If I y dash is equal to e raised to power x. This is the value of y dash. From here we have find the value of y dash. Now again differentiating this with respect to x. This is second, third. Again differentiating both sides of equation third with respect to x, we get with respect to x we get d upon dx of y dash is equal to d upon dx of e raised to power x. If either y double dash is equal to e raised to power x, this is equation number 4. तो बच्चों गिवन सॉल्यूशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक बार डेरिवेटिव किया y डैश निकाला, दूसरी बार डेरिवेटिव किया y डबल डैश निकाल लिया, e raised to power x. Now taking the left hand side of the equation number 2, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 3 और 4 से, और देखना है राइट हैंड साइड आ रही है कि नहीं आ रही है। यही बच्चों इसका प्रोसीजर है। तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2, नाउ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is equal to y double dash minus y dash, that is y double dash is e raised to power x minus y dash is also e raised to power x, and that is equal to 0, and that is equal to right hand side. Hence
y is equal to e raised to power x plus 1 is a solution of the differential equation y double dash minus y dash is equal to 0. तो ये है बच्चों इसका तरीका, ये है इसका प्रोसीजर। एक्सरसाइज 11.2 डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी बहुत ही आसान है। इस तरीके से यदि आप करेंगे यूज ऑफ ओनली डेरिवेटिव्स इन दीज क्वेश्चन। कई बार एक बार ही डेरिवेटिव करना होता है, कई बार दो बार, ये इट डिपेंड्स अपॉन दी टर्म्स यूज्ड इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। y डैश है, y डबल डैश है, तो दोनों निकालने होंगे, दो बार डेरिवेटिव करना होगा। y ट्रिपल डैश है तो एक बार दोबारा डेरिवेटिव करना था। तो इस तरीके से बच्चों, तो दिस इज द प्रोसीजर टू वेरीफाई दैट ए गिवन इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस। दैट्स ऑल। Now question number 2, exercise 9.2 of the differential equation. Question is, verify that y is equal to x square plus 2x plus c is a solution of the differential equation y dash minus 2x minus 2 is equal to 0. तो इस बार भी बच्चों दो चीजें दे रखी हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द गिवन इक्वेशन इज y is equal to x square plus 2x plus c. This is equation number 1, and the given differential equation is y dash minus 2x minus 2 is equal to 0. That is second. This is the given differential. So in order to verify that it is the solution of this differential equation, we have to find only one thing, that is y dash. So therefore differentiating both sides of equation 1 with respect to x, we get dy upon dx, that is equal to d upon dx of x square plus 2x plus c. Therefore this is y dash is equal to derivative of x square is 2x and derivative of 2x is 2 and derivative of the constant c is 0. This is our question number 3. So now taking the left hand side of the differential equation. Now left hand side is equal to y dash minus 2x minus 2. That is equal to, substituting the value of y dash, we get 2x plus 2 from equation number 3 minus 2x and minus 2. After cutting, we get 0, and that is the right hand side. Hence we can say that y is equal to x square plus 2x plus c is a solution of the given differential equation y dash minus 2x minus 2 is equal to 0. तो ये है बच्चों इसका प्रोसीजर। इस तरीके से हम वेरीफाई दैट ये इसका सॉल्यूशन है। y is equal to cos x plus c is a solution of the differential equation y dash plus sin x is equal to 0. So this is the question. Verify that cos x plus c is a solution of the differential equation y dash plus sin x is equal to 0. So according to the question, the given equation is y is equal to cos x plus c. This is, and the given differential equation is
y dash plus sin x is equal to 0. दिस इज सेकंड. अब बच्चों हमने इस क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए कि ये इक्वेशन नंबर 1 इसका सॉल्यूशन है, हमें y डैश निकालना होगा. y डैश मींस डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे. इक्वेशन नंबर 1 की डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड of equation 1 with respect to x, we get d upon dx of y is equal to d upon dx of cos x plus c, and dy upon dx is y dash is equal to minus sin x, and derivative of the constant c is 0. This is the third equation. Now taking the left hand side of the given differential equation. Now left hand side is equal to y dash plus sin x is equal to, substituting the value of y dash, we get minus sin x plus sin x, that is equal to 0 after cutting, that is equal to right hand side. Hence we can say that y is equal to cos x plus c is a solution of the differential equation y dash plus sin x is equal to 0. That's all. Now question number 4. Verify that y is equal to a square minus x square under root is a solution of the differential equation x plus y into dy upon dx is equal to 0, where x belongs to open interval minus a to a. So solution according to the question, the given solution is y is equal to a square minus x square square root. This is first. And the given differential equation is x plus y into dy upon dx, that can be written as y dash is equal to 0. This is equation number 2. Therefore, in order to verify that this is the solution of this differential equation, we have to find dy upon dx and substituting the value here and value of y here, we will get the right hand side. If we get the right hand side 0, after solving the left hand side, we can say that it is the solution of the differential equation. So first of all, differentiating both sides of equation 1 with respect to x, we get dy upon dx is equal to d upon dx of a square minus x square raised to power 1 by 2. Square root means raised to power 1 by 2. And its derivative is given by function raised to power n, that is 1 by 2 into a square minus x square raised to power 1 by 2 minus 1 and minus 1. Further derivative of fx, that is d upon dx of a square minus x square. It becomes 1 by 2 into a square minus x square raised to power minus 1 by 2 into derivative of a square is 0 and derivative of minus x square is minus 2x. Now this a square minus x square raised to power minus 1 by 2 becomes minus 2x upon 2 into a square minus x square square root. When cutting 2 with 2, we get minus x upon a square minus x square square root.
This is the value of dy upon dx, and it is the equation number 3rd. The value of dy upon dx becomes minus x upon a square minus x square. Now let us take the left hand side of the differential equation. Now left hand side of the differential equation, that is x plus y into dy upon dx. Substituting the value of y, that is a square minus x square under root. And substituting the value of dy upon dx from equation number 3rd, that is minus x upon a square minus x square square root. After cutting this, we get x minus x, that is equal to 0, and that is right hand side. Therefore, y is equal to a square minus x square, where x belongs to minus a to a is a solution of the differential equation x plus y into dy upon dx is equal to 0. Hence that right. तो इस तरीके से बच्चों हम जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी तो ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है कि hence the given solution is the given equation is the solution of the given differential equation, और उसका नेम भी लिखना है. Hence that right.